हमारा नाम है गुरु राज शीलवंत। हम बीदर से आए हैं। फिर हमारे को थोड़ा पैर का ब्लड क्लॉट हो गया था। हम आ गए इधर। फिर अपोलो हॉस्पिटल बोल के हमारे को इंटीमेशन दिए, अपोलो हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में सब रिकवरी होता बोले। तो हम इमीडिएट हॉस्पिटल को आए और इधर आके चेक करे और इमरजेंसी था बहुत, हमारे को बहुत पेन था और उधर आने से दोनों पैर हमारे को बहुत पेन चालू हो गया था। उसके बाद डॉक्टर प्रकाश गौरव हमारे को चेक करे और उन्होंने ट्रीटमेंट करे, हमारे को अच्छा हो गया। हमारे को अभी दोनों पैर चलने को आ रहा, पैर काटना भी बोले थे हमारे को, उतना दर्द हो गया था। फिर उसमें तो डॉक्टर जो मैंने कोशिश करके हमारे दोनों पैर बचाए। अभी तो अपोलो हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे दिया हमारे को। 3 महीने से ऑपरेशन होने के बाद 3 महीने से चलने को चालू कर दिया मैं। अभी 5 महीना हो गया मेरा ऑपरेशन होके। अभी दोनों पैर से अच्छा चल रहा हूँ मैं। अपोलो हॉस्पिटल वेरी वेरी थैंक्स, अच्छा ट्रीटमेंट दिए हमारे को, वेल सपोर्ट कर रहे हैं हमारे को। हॉस्पिटल में सब ट्रीटमेंट अच्छा है और सब केयर भी करते हैं, सब दिक्कत नहीं है इधर हॉस्पिटल में। वेरी गुड हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर लो। डॉक्टर प्रकाश गौरव, फिर इधर आने के बाद मालूम हो गया हमारे को ये कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट करते बोल के। और इधर आने के बाद बोले प्रकाश गौरव और ये प्रॉपर गुलबर्गा वाले है और इधर अच्छा पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े सो इनो और हमारे को ट्रीटमेंट ऑपरेशन उन्होंने करे, प्रकाश गौरव बोल के अच्छा ट्रीटमेंट करे। अब हमारे को सब सही राय दे, अच्छा ट्रीटमेंट करके टैबलेट दे के अच्छा ट्रीटमेंट करे। 8 दिन हम घर को गए, कब फोन करे जब क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं, थोड़ा दिक्कत आया तो भी डॉक्टर जब फोन उठा के हमको रेस्पॉन्स दिए और टैबलेट दे के रिकवरी हो गया। और महीने को हम चेकअप कर रहे को आ रहे। अब प्रकाश गौरव डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है और ट्रीटमेंट अच्छा भी करते, रेस्पॉन्स भी अच्छा देते। Thank you. Hello, I'm Dr. Prakash Goura, Senior Consultant Vascular and Endovascular Surgeon at Apollo Hospitals, Jubilee Hills, Hyderabad. So this patient is a 50-year-old gentleman who presented to the emergency from Gulbarga with bilateral lower limb weakness. And when he presented, he was seen by a neurologist at his local place, thinking that it was a neurological issue. And then after evaluation, he has come to know that the patient has got occlusion of the aorta. Aorta is the main blood vessel that comes from the heart and supplies all the organs in the body, and at the end when it comes into the abdomen, it supplies both the legs. So his occlusion was there from the aorta and into both the legs. So at presentation, this becomes a very emergency situation wherein the blood supply to the lower part of the body is cut off, which creates a ischemia, that is gangrene sort of situation in the lower limbs. If not identified and operated very quickly, these patients will sometimes lose the legs as well as they will lose the life also. So luckily the patient came to us upon immediate evaluation. He had already come 24 to 48 hours late to the hospital. So his condition was very tricky. We did an emergency surgery. We removed the clot from the aorta as well as both the legs. When evaluation, we saw that muscles in the leg were not that good. But upon repeated treatments, repeated injections and then continuous treatments, he is doing very well right now. He is able to walk on his foot. More than 90-95% of his deformity is corrected and then he is happy. So the point to tell is, the aortic emergencies or the vascular emergencies can be very tricky because sometimes these patients can go to neurology, other general physicians also. So timely identification becomes very important. Vascular occlusions or vascular ruptures, these are very emergencies. When identified properly, these patients can have very good outcomes in their life. So this patient was also a tobacco chewer. That's also very important. The patient is not a diabetic, not hypertensive, but he chews tobacco. So tobacco is very harmful. The reason for his clot is also tobacco. Tobacco in any form, either you take it as smoke or you chew it, or if somebody in your house also smokes, that becomes passive smoking is also very dangerous. So stay away from tobacco, reduce vascular complications. Thank you.